Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 400 MCQs of Augustan Age. Dear friend, I have completed from question number 1 to 303 in part up to part 12, 1 to 12. This is 13 part. डियर फ्रेंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूज़फुल फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यदि आप भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 जो है हमारा ये कहता है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डेनियल डिफोज वर्क इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर। 304 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डेनियल डिफोज वर्क इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर। ऑप्शन ए है हिस्ट्री ऑफ डेविल, देन रॉबिन्सन क्रूसो, देन डंकन कम्बेल, देन मोल फ्लैंडर्स। ऑप्शन बी है मोल फ्लैंडर्स, हिस्ट्री ऑफ द डेविल, रॉबिन्सन क्रूसो एंड डंकन कम्बेल। ऑप्शन सी है रॉबिन्सन क्रूसो, डंकन कैम्बेल, मोल फ्लैंडर्स, हिस्ट्री ऑफ द डेविल। एंड लास्ट है डंकन कैम्बेल, मोल फ्लैंडर्स, हिस्ट्री ऑफ द डेविल एंड रॉबिन्सन क्रूसो। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Robinson Crusoe, then Duncan Campbell, then Moll Flanders, then History of the Devil. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विथ जॉनथन स्विफ्ट्स अफेक्शन फॉर इस्थर वैन ब्रैग। ऑप्शन ए द कैम्बैन, ऑप्शन बी कैडेनस एंड बेनेसा, ऑप्शन सी द फ्यूनरल एंड ऑप्शन डी द स्पेसियस फिरमेंट ऑन हाई। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील विथ जोनाथन स्विफ्ट्स अफेक्शन फॉर इस्थर वैन ब्रैग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैडेनस एंड बेनेसा। कैडेनस एंड बेनेसा इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 306। Jonathan Swift was supporting modern authors in the Battle of the Books, who was engaged in the controversy on behalf of the ancient authors. Jonathan Swift was supporting modern author in the Battle of the Books. So, which one is the correct answer? Option A, Sir William Temple. Option B, George Etheredge. Option C, Samuel Butler. And option D, John Milton. So, Sir William Temple. Option A is the correct answer. Sir William Temple is the correct answer. Now, question number 307. Swift wrote his political tract for Try General called. Again, Swift wrote his political tract for a Tory general called. Option A, The Research. Option B, The General to Stella. Option C, Herald. And option D, The Examiner. So, which one is the correct answer? The correct answer, option D, Examiner. Yes. Now question number 308. Question number 308. Swift Generals to Stella is a kind of informal private logbook. For whom was it written? Swift's General to Stella is a kind of informal private logbook. For whom was it written? Option A, Sir William Butler. Option B, Esther Johnson. Option C, Samuel Butler. And option D, John Bunyan. So, option B, Esther Johnson is the correct answer. Esther Johnson is the correct answer. Now, question number 309. One of the following work supported the Irish in their revolt. Identify it. One of the following works supported the Irish in their revolt. Identify A.
it? Option A, the Drapier Letters. Option B, Roxana. Option C, A Modest Proposal. And option D, Duncan Campbell. So option A, the Drapier's Letter is the correct answer. The Drapier's Letter is the correct answer. Now question number 310. Name the writer of Discourse to prove the antiquity of the English tongue. Again, name the writer of Discourse to prove the antiquity of the English tongue. Option A, Jonathan Swift. Option B, Daniel Defoe. Option C, Samuel Butler. And option D, Joseph Addison. So which one is the correct answer? Option A, Jonathan Swift is the correct answer. Jonathan Swift. Now question number 311. Which of the following poem composed by Joseph Addison? Which of the following is a poem composed by Joseph Addison? Option A, The Guardian. Option B, The Vision of Mizra. Option C, The Campaign. And option D, The Drummer. So which one is the correct answer? The correct answer is option C, The Campaign. The Campaign is the correct answer. Now question number 312. Rosamond 1707 by Joseph Addison is A or N? Rosamond 1707 by Joseph Addison is a poem. Option B, elegy. Option C, masque. And option D, opera. So option D, opera is the correct answer. Now question number 313. Which of the following is a political allegory of Addison? Which of the following is a political allegory of Addison? Option A, Rosamond. Option B, Cato. Option C, Public Credit. And option D, The Vision of Mirza. So option C, Public Credit is the correct answer. Public Credit is the correct answer. Now question number 314. The first prose comedy of Richard Steele is? The first prose comedy of Richard Steele is? Option A, The Funeral. Option B, The Conscious Lover. Option C, The Lying Lover. Option D, The Tender Husband. So the first prose comedy of Richard Steele is option A, The Funeral. The Funeral. Dear friends, these questions are very useful. So listen these questions carefully and remember for long period. Now question number 315. Question number 315 है. Yes. Which of the following arrangement of Steele's four periodical is in the correct chronological order? Option A, The Englishman, The Guardian, The Reader, and The Plebeian. Option B, The Guardian, The Englishman, The Plebeian, The Reader. Option C, The Guardian, The Englishman, The Reader, and The Plebeian. And option D, The Plebeian, The Guardian, The Englishman, and The Reader. So which one is the correct answer, which is in chronological order? So option A, The Englishman, The Guardian, The Reader, and The Plebeian. Option A is the correct answer. Now question number 316. Question number 316 है. Who started the General, the Review in 1704? Who started the General, the Review in 1704? Option A, Sir Richard Steele. Option B, George Berkeley. Option C, Daniel Defoe. And option D, Joseph Addison. So which one is the correct answer? Option C, Daniel Defoe is the correct answer. Yes, Daniel Defoe. Option C, Daniel Defoe is the correct answer of 316. Now question number 317.
For which of the following work was Daniel Defoe fined and imprisoned? किस काम के लिए, किस वर्क के लिए डैनियल डेफो को फाइन और जेल भेजा गया था? ऑप्शन ए द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, ऑप्शन बी द शॉर्टेस्ट वे विथ द डिसेंटर्स, ऑप्शन सी डंकन कैम्पबेल एंड ऑप्शन डी मेमोयर्स ऑफ ए कैवेलर. सो ऑप्शन बी द शॉर्टेस्ट वे विथ द डिसेंटर्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 318. The fiction of Daniel Defoe is known for its. The fiction of Daniel Defoe is known for its. Option A theme, option B tragedy, option C language and option D realism. So Daniel Defoe is known for its realism. Now question number 319. One of the following work of Daniel Defoe is a political work. Which one? One of the following work of Daniel Defoe is a political work. Which one? Option A General of the Plague Year, option B Moll Flanders, option C The True Born Englishman and option D Captain Singleton. So option C The True Born Englishman. Now question number 320. Whose fiction is described as the novel of incident? Whose fiction is described as the novel of incident? Option A Daniel Defoe, option B Jonathan Swift, option C George Blinkbrook and option D George Berkeley. So which one is the correct answer? Option A. Option A Daniel Defoe. Daniel Defoe is described as the novel of incident. Question number 321. Pope's an essay on criticism is a poetic work. पोप का जो अलेक्जेंड्रा पोप का एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ए पोएटिक वर्क. इट वाज रिटन इन. तो किस में ये पोएटिक वर्क लिखा गया? ऑप्शन ए हीरोइक कपलेट, ऑप्शन बी राइम रॉयल, ऑप्शन सी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए heroic couplet is the correct answer. Now question number 322. Pope reissued the Rape of the Lock after adding machinery of self to its original version in. Pope reused the Rape of the Lock after adding machinery of self to its original version in. Option A 1713, option B 1715, option C 1717 and option D 1718. So which was the correct answer? The Rape of the Lock after adding machinery of Silpho to its original version is issued in 1713. Option A is the correct answer. Now question number 323. Which among the following poem contains the portrait of Edison? Which among the following poem contains the portrait of Edison? Option A The Dunciad, option B Epistle to Dr. Arbuthnot, option C Imitation of Horace and option D Iliad. So option B Epistle to Dr. Arbuthnot is the correct answer. Now सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. क्वेश्चन नंबर 324. नेम द पोएम कंपोज्ड बाय पोप विच डिस्कसेस द मैन्स प्लेस इन यूनिवर्स. पोप अलेक्जेंडर पोप की ऐसी पोएम जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है आदमी का, यूनिवर्स में जो आदमी का स्थान है मैन का. तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है. ऑफ द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ मैन, ऑप्शन बी ऑफ द यूजेज ऑफ रिचेस, ऑप्शन सी टू लॉर्ड बर्थस्ट एंड ऑप्शन डी एन essay on man. तो एन essay on man is the correct answer, option D. Now question number 325. This is the last question. Which one
Yes, which among the following poem of Pope is known by its another title Prologue to the Satires? इनमें से कौन सी पोएम जो है दूसरे टाइटल प्रोलॉग टू द सेटायर्स के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए द रेप ऑफ द लॉग, ऑप्शन बी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट एंड ऑप्शन डी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, epistle to Dr. Arbuthnot. Thank you for watching this video, guys.